Hello everyone. In last videos we have seen to find the particular integral, how different methods we can apply. Particular integral जो कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें बहुत ज़रूरी होता है CF और PI. CF को कैसे निकालना है हमने देख लिया. पर्टिकुलर इंटीग्रल को हमें 3 डिफरेंट मेथड से कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. इसमें से हमने 2 मेथड्स यहाँ तक देख लिए. पहले तो डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज़ करके, then the second one which we saw it, which was method of variable of parameters, that we have seen, and this is the third method which we are going to look today in this video for undetermined coefficient method to find particular integral. So ये third method है particular integral का जो आपके syllabus में है. तीनों में important methods है, आपको अच्छी तरह से आने चाहिए. Different ways are there. Here also the finding the CF part, complementary function जो भी हम निकालते थे वो पार्ट जैसे था हमने पहले भी किया था वैसे ही रहेगा. सिर्फ PI का जो पार्ट है जो हम ये डिफरेंट मेथड है उसके हिसाब से उस डिपेंडिंग ऑन दैट वी विल बी फाइंडिंग हियर. हियर आई हैव लिस्टेड सम स्टेप्स फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैंने लिखे हुए हैं. जैसे कि फर्स्ट स्टेप विल बी गिवन इक्वेशन. ये हमारा पहले गिवन इक्वेशन विल बी देयर विच इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन with constant. Then here RHS we will have to look at the RHS of the given equation. क्यों देखनी है? क्योंकि उसके depending on the RHS we have to consider one trial solution which we called it as a guess trial solution. Guess का मतलब है कि हमें RHS of given differential equation का हमें देखना है और according to that we will be considering that. How we will consider that I will discuss in later part. That will be the step which we have to take it. Then we have to find, this will be our YP which is nothing but the trial solution that we have to substitute in the given equation, and we have to simplify it to find the values like coefficients, and then we have to find the value of PI. यहाँ पे डिफरेंट जो स्टेप है जो आपको याद रखनी है वो है व्हाट गेस ट्रायल सॉल्यूशन वी विल बी कंसिडरिंग. उसका एक मैंने इन डिटेल आई हैव एक्सप्लेन दैट लेटर इन द स्लाइड. सो हियर इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग अबाउट ट्रायल सॉल्यूशन, हाउ इट शुड बी देयर. अगर RHS लेफ्ट हैंड साइड में कॉलम में मैंने RHS जो डिफरेंट टाइप के RHS विच वी कैन फाइंड इट दैट आई हैव लिस्टेड हियर, एंड बेस्ड ऑन दैट ट्रायल सॉल्यूशन हमको क्या लेना है दैट आई हैव पुट इट इन द राइट हैंड साइड कॉलम. अगर कांस्टेंट वैल्यू आती है RHS में, सबसे पहले ये कांस्टेंट जब आती है RHS में तो हमें ट्रायल सॉल्यूशन कंसिडर करना है A विच इज़ इक्वल टू YP इज इक्वल टू A. नेक्स्ट इज इफ e टू द पावर AX एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर आती है RHS तो हमें इस प्रकार लिखना है YP विल बी A इंटू e टू द पावर AX. अगर RHS ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में आती है जैसे कि sin x है cos x है, अगर इस तरह से आती है तो हमें YP को कंसिडर करना है A इंटू साइन एक्स प्लस B इंटू कॉस एक्स. देन इट इज़ कम्प्लीटली कमिंग एज x टू द पावर समथिंग, तो हमें YP को कुछ A1 x टू द पावर n प्लस A2 x टू द पावर n माइनस 1. तो ये x की पावर कम होती जा रही है और A1 A2 आर नथिंग बट डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स. अगर राइट हैंड साइड आती है A टू द एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, ये दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म में आती है तो सब्स्टिट्यूशन और द ट्रायल सॉल्यूशन वी कॉल इट, इट विल बी समथिंग लाइक दिस. अगर एक्सपोनेंशियल एंड x term that it comes together, then also we have to consider YP is equal to e to the power AX, and this bracket will be coming, ABC will be the constant और x की पावर यहाँ पे कम होती चली जा रही है. तो these are the ये आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए और याद भी रहना चाहिए कि डिपेंडिंग ऑन कौन सी RHS के लिए क्या ट्रायल सॉल्यूशन हमें कंसिडर करना है वो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए. So its table is important. Okay, now let's see how we can use this method to find the particular integral. So here is the question.
y double dash minus 4y dash minus 12y which is equal to 3 into e to the power 5t. So ये तो दिया हुआ इक्वेशन इन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है. पहले एज इट इज़ वी विल राइट इट एंड वी विल कॉल इट इक्वेशन 1. सबसे पहले इम्पॉर्टेंट स्टेप है उसको डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म में लिख लेते हैं. सो जहाँ पे भी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डबल डिफरेंशिएशन है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, उसके लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे डी स्क्वायर. जैसे मैंने यहाँ पे y डबल डैश के लिए y डी स्क्वायर किया हुआ है, सिंगल डैश के लिए d करेंगे y डैश के लिए बिकॉज सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव इट इज़, एंड दिस विल बी एज इट इज़. So after so this will become d square y dy, then this will be like as it is minus 12y. So here after taking out y common, I will get this whole thing expression in form of d. So that is nothing but our f of d. So whole this expression in terms of d we got it, which is f of d. Now उसके बाद भी किसी step is quite easy. We have to convert that into auxiliary equation. Instead of d we will be writing m in that equation. So this is I got it auxiliary equation which I derived from f of d. This if you look here it's a quadratic equation. Quadratic equation कैसे solve करते हैं हमें पता है कि उसके roots we just split the middle term and we find the roots of it. So same thing I did it here, split the middle term and I found the two roots which are nothing but m is equal to 6 and m is equal to minus 2. Now जो भी हमें value आती है m की उसके depending on that we write the CF. So CF की वैल्यू यहाँ पे एक वैल्यू 6 है, तो 6 वैल्यू के लिए मैं लिखूँगी one term will be there. You can write it first also, it doesn't matter if you write first or second, it doesn't matter. So C2 into e to the power यहाँ पे 6 आ चुका है, and for this m's value I will be writing C1 into e to the power minus 2. So even though you write it C1 e to the power 6 2 plus C2 into e to the power minus 2, that doesn't matter, the order is it's the same thing, it's one and the same thing. Okay. So for each of these m's value we have put each term over here in the CF. So this is how we got CF, complementary function. Now next thing is we have to consider the trial solution. How we will be considering trial solution? We have to go back to the equation, given equation, and see what is the RHS given. If you remember, RHS of the given equation is in the exponential form. If you see here, it's in the exponential form, e to the power 5t. So our guess solution will be a into e to the power ax. So here is, this is what my trial solution or guess trial solution. So since right hand side was in exponential form, this particular trial solution has been picked up. So now we have to find y dash. It's simply differentiation, single order differentiation of this one. So which is phi a into e to the power phi t. Then it's a double differentiation. I have did it here. So e to the power phi t, then this phi will again get multiplied over here. So it will become 25a into e to the power phi t. So this whatever values I have received for y dash and y double dash, I have to put that in equation 1. This is equation 1 for your reference. I have written over here. ये हमारा equation पहले in the previous step we have found it. So इस equation में हम क्या करेंगे, ये y double dash की y dash की जो भी value हमें यहाँ आ चुकी है और y की value जो हमने guess solution, trial solution, या तो आप y बोल सकते हैं या तो yp बोल सकते हैं, it's one and the same thing. जो भी हमने consider की थी ये यहाँ पे हम यहाँ पे रख देंगे. So that after substitution I will get this form of equation. All the values I have substituted from here, y above, y dash and y double dash. So after simplification, if you just expand this bracket, this will be minus 20, then this is 25 and this minus 12. So if you do the calculation, it will give you minus 7 into 8 to the power phi t, which is equal to
right hand side 3 into e to the power phi t. So, after changing the after rearranging the equation, you will get the value of a, which is minus 3 by 7. Now, this is how we will get the particular solution, that will be our particular solution. The a's value, which is minus 3 by 7, which you got it, we will write it here in the trial solution. That is nothing but our particular solution for this given question. So, this is how we can use this method of undetermined coefficient method. सिंपल है काफ़ी, सिर्फ आपको याद रखना है कि RHS अगर एक्सपोनेंशियल में दे दी है, या तो डिफरेंट फॉर्म में कांस्टेंट है, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो भी है दी हुई है, डिपेंडिंग ऑन दैट यू हैव टू पिक द ट्रायल सॉल्यूशन, जो कि यहाँ पे मैंने ये टेबल में सारी वैल्यूज़ को लिखा हुआ है. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट स्टेप. इफ़ यू अंडरस्टूड दैट, आई थिंक उसके पहले के जो CF की फाइंड आउट करने की ट्रस्ट स्टेप थी, दैट इज़ सेम एज इट इज़, सिर्फ वो चेंज यहाँ पे दिखाई देता है कंपेयर टू अदर मेथड्स. If you revise the table very well, I think this would be very easy for you to find the particular integral by using this method. Sometimes they specifically in the question paper they ask you to use this undetermined coefficient method. तो आपको जो पूछा है उसी मेथड को सिर्फ फॉलो करना है. You cannot use other method which is we have learned it, like method of variable of parameter or by using the D equation, differential method, that also we are not allowed to use it. अगर इसी को specifically पूछा है तो you have to follow the same thing, which is also quite easy also once you get the idea about the table, what we have to use it. I think it is clear to you. The only important part in this method is you have to remember this how the steps we have to follow, and the other thing is table, this like what trial solution we have to pick it depending on the sin function दिया हुआ है, exponential दिया हुआ है, constant है, 0 है, जो भी है, depending on that we have to pick the trial solution. That is important step in this whole method. I hope it's clear to you. Thank you.